Good morning, all of you. Today, myself, HOD PG Department of Chemistry, Sahibganj College, Sahibganj, Dr. Anil Kumar. In this class, we will discuss the PG Semester 3, Paper 11, that is Environmental Chemistry. Environmental Chemistry, important questions. That will be the important questions, है ना, for the coming exam. For the coming exam. तो फॉर द सेशन 2022 से 2024 होप you will must go through these questions, that is the smart questions for environmental chemistry for PG semester 3 students. Now what are the different questions, important questions? Now different questions are, question number 1, discuss the biogeochemical cycle of carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur. You have to discuss the biogeochemical cycle of carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur. Now question number 2, that is question number 2, explains the different water quality parameters. What are the different water quality parameters we have to discuss? Dissolved oxygen, biological oxygen demand, carbon oxygen demand. And what are the contents of chlorides, sulfates or microorganisms in water quality? You have to discuss the DO, BOD, COD, and what is the effect of content of chloride, sulfate and microorganisms in water quality. Now next question, explain the detection methods of arsenic, cadmium, chromium or mercury. This is, you have to detect, how you detect the arsenic, cadmium, chromium, Sg in different water. Now question number this, another question, what are the macro and macronutrients in soil? You have to find out what are the different micro and macronutrients in the soil. In your dissertation, you have gone through, you have gone through the different constituents of soil, nutrients of soil. तो वो आपको हेल्प करेगा, जो आपने डिजर्टेशन किया है उस डिजर्टेशन से में भी आपको ये हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. अगला क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल का क्या क्या कंपोजिशन है, इस पर ही फोकस कीजिए. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द, एक्सप्लेन द पॉल्यूशंस काउज्ड बाय द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स और मेटल्स. एग्जाम में थोड़ा कंफर्म रहिएगा, एनी टू, कोई दो रह सकता है. क्या रह सकता है कि व्हाट एक्सप्लेन द पॉल्यूशंस काउज्ड बाय, फर्टिलाइजर के द्वारा क्या पॉल्यूशन काउज होता है, या पेस्टिसाइड से क्या पॉल्यूशन काउज होता है, या प्लास्टिक्स के द्वारा क्या पॉल्यूशन काउज होता है, या डिफरेंट मेटल्स जो हमारे प्राप्त हैं इन्वायरमेंट में उसके चलते क्या क्या पॉल्यूशन होता है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है. ना अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का क्या केमिकल कंपोजिशन है उसको आपको डिस्कस करना है, डिफाइन करना है. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नाउ अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में किस तरह कर केमिकल या फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको आपको डिफाइन करना है. तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये सब क्वेश्चंस को अगर आप फोकस कीजिएगा तो आई होप यू विल गेट द मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दिस डायरेक्शन. सो यू मस्ट फोकस दिस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली so that you can write good answer
in the coming exam and you will get the maximum marks. Now, another question. Explain the greenhouse effect, and that is called GHE, greenhouse effect, and acid rain. Anyone? Sure short. Sure short questions. What do you mean by greenhouse effect and what do you mean by acid rain? And what do you mean by air pollution? तो ये सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को आप पकड़ेंगे तो आपको आंसर्स लिखने में अच्छा भी लगेगा और उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में रहना चाहिए. Now question number, another question. Discuss its causes, control method and analytical method for the measurement of air pollution. माने एयर पॉल्यूशन को किस मेथड से, क्या कंट्रोल मेथड है, इसके क्या कॉजेज है और कौन सारे मेथड से हम लोग एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. मैं टोटल केमिस्ट्री लिखना होगा. केमिस्ट्री आपको लिखना होगा रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन डिफरेंट मेथड्स. इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका क्या कॉज है और क्या क्या एनालिटिकल मेथड्स है. क्वेश्चन आगे, ये रिपीट हो गया है. दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चंस. Some typing problem. This is the repeated. Same questions are there. Another question. This is same question. Now another question. Discuss the industrial pollution caused by. Industrial pollution किसके द्वारा होता है? तो you have to explain the cement. Number B is sugar. Number C is drug. And number D is thermal power plant. And number is nuclear power plant. हमारा जो what are the different causes of industrial pollution due to the cement industry, sugar industry, drug industry, thermal power plant industry और nuclear power plant. इसके चलते क्या क्या causes होते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में, उसको हमको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. We have to briefly explain the different causes. Now another questions. उसको बुला लो, अब खत्म. Write short notes on. You have to write the short notes on aquatic pollution. Now chemical composition of water bodies. Number C is hydrological cycle. And number D is smog formation. Now number E is continuous monitoring instrument of air pollution. Number F is disposal of waste and their management. Disposal of waste and how will you manage the waste? That is the disposal of waste and their management. Now G is radionuclide analysis. And number H is what is the principle of decomposition. You have to focus on this question, that is aquatic pollution, chemical composition of water bodies, hydrological cycle, smog formation, continuous monitoring instrument of air pollution, how air pollution is instrumentally managed या monitored, disposal of waste and their management, radionuclide analysis, and H is principle of decomposition. These will be the short questions. Now this is also too important. That is too important. You have to discuss the Bhopal gas tragedy or Chernobyl or 3 Miles Island and Minamata disaster. From this, any two will be there.
and it will be there in the coming exam. So you must focus on these topics. Must focus. That is Bhopal gas tragedy, Chernobyl, 3 Mile Islands, Minamata disaster. Now, another question. Explain the chemical solution to environmental pollution. What are the chemical solution to, to protect the environmental? So these are the important questions in environmental chemistry. You must go through these questions so that you can get maximum marks in the coming exam. In the coming exam, I hope this all whole video will be available in our YouTube channel, that is Hot Spot Chemistry by Dr. Anil Kumar. So you must go through this channel and you will get the maximum questions. Next day, new video. So thank you all of you. Wish you good luck for the coming exam. Again, देख लो.